नमस्कार भक्तों। सावन के इस पवित्र माह में इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात्। ॐ
गतम् पापम् गतम् दुःखम् गतम् दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात् ॐ गतम् पापम् गतम् दुःखम् गतम् दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात् ॐ